हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिंगाक्ष। अब हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम लिया है, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रॉब्लम है मेरा कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। ओके, एक सर्कुलर पार्क है ये और जिसका डायमीटर क्या है, 13 है। ओके, एंड इन अ सच वे दैट द अब क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है पोल हैज टू, मतलब एक पोल है जिसको कहीं पे लगाना है इस सर्कुलर पोल। पोल जैसे लाइट का पोल होता है वैसा कुछ ये सर्कुलर पार्क में कहीं लगाना है उसको, ठीक है। To be erected at a point on the boundary of circular park of diameter in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gate, मतलब एक गेट ये है A एंड अदर गेट ये है B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब बोल रहा है कि दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू diametrically opposite fixed gate A and B on the boundaries, and is it possible to do so? If yes, so at what distance from the two gates should the pole be erected? अब पूछ रहा है अगर ये पॉसिबल है, मतलब समझ रहे हो, अगर ये x है, ये x डिस्टेंस है, मान लो ये पोल है मेरा P, ठीक है। यहाँ पोल है, ये गेट नंबर ए है, गेट नंबर बी है, और यहाँ पे हमको पोल बनाना है, हम एक मान लें तो बोल रहा है जो ए से पी का डिस्टेंस अगर हम एक्स ले लें तो यहाँ बोला है inside the differences of a distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary 7, मतलब x और अगर ये डिस्टेंस y मान लें हम तो x माइनस वाई कितना है, 7 है। सो x क्या हो जाएगा मेरा, 7 प्लस वाई हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा मेरा, y मेरा हो जाएगा 7 माइनस 7 - x, और y इज इक्वल टू x - 7। ओके, तो x माइनस, तो y को हम यहाँ पे x - 7 लिख सकते हैं। अगर ये वाला डिस्टेंस मेरा x है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑलरेडी बोला है अगर ये डिस्टेंस y ले लें तो x - y 7 होगा, यहाँ पे बोला है तो ये y इज इक्वल टू x - 7 हो जाएगा। तो अब ये जो एक पूरा देख रहे हैं क्या बन रहा है, ये जो ए बी और पी ए बी, ये मेरा जो पूरा है ये x - 7 है। ओके, एंड दिस इज माई x। ओके, एंड दिस इज माई 13, दैट इज, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है कि क्या होता है, ए बी स्क्वायर जो होता है मेरा वो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। सो ए बी इज माइन 13 स्क्वायर, ए पी इज माइन एक्स स्क्वायर, and that bp is mine x - 7 का whole square. Now we will solve this equation, and first here they had asked is it possible to do so. So let's first solve this equation. 13 square 169, x square plus x square plus 49 7 minus 14x, okay, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, so this is, so 169 2x square plus 49 minus 14x. Now if you take this 69 here, then we will get back 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. Okay, so 2x square minus 14x, and this will be 0 to 120 is equal to 0, और ये x square minus 7x minus 60 is equal to 0. So this is my the quadratic equation. Okay, standard quad. So first we form the quadratic equation. So how to form the quadratic equation such problem I had already talked in my video earlier, so you can watch that video.
Now let us first decide discriminant. Discriminant is what? B square minus 4ac. We know discriminant. Discriminant is given by this value. Okay. And from there we decide roots of the quadratic equation, that is greater than 0, less than 0, or equal to 0. Okay. So let me see first what is here. A is 1, B is minus 7, and that C is minus 60. So B square will be 49 minus plus 240. Okay, 4AC, 4A into C, that is 4 into 1 into minus 60, and already there is minus, so it will be greater than 0. There is a real roots. Okay, real and distinct roots. Now find the how we can find it. We have x square, so we can directly find it out using the formula of that Sidrachar. X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by met 2a. Okay, so x is equal to, अब what is minus b, plus 7 हो जाएगा, plus minus b square already we had find at 49 plus 240, what it will be, add it, 9 289. Okay, and by met 2. Okay, so 289 is basically the square of 17. Okay, so now if we will have 7 plus 17 by me 2, or 7 minus 17 by me 2. So we have that, what will we have, 17 7 24 2, or minus value. So x is equal to 12 is the distance. We will ignore that negative value. Okay, so this is the solution. And what are the distances? That AP is equal to 12, and that BP is equal to 12 minus 7, and that will be the 5. Okay, at BP. This is the solution of the